Hello guys, welcome back to our channel. Mr. and Mrs. Pandit. So today we are going to give our reaction on Nargul fighting scenes. Yes, and this one is from Irtugrul Yes. Ghazi. So we have done Irtugrul Ghazi theme song few days back in our channel, and we got amazing responses, Massive guys. response for our yes, video, and right? this one is the very well requested video from that video. That is Nargul fighting scenes. Yes. So that video, like the theme song itself, was a very amazing content, It and shows a lot of the things behind the Yeah. scene. What has happened? what right? has happened, like the Full theme, Turkish right? soldiers, their balidan, their Everything. struggle, their fighting, and each and everything. everything, So this yeah. one we don't know what it is about, the angry moments. Yes. Maybe some soldier unka fighting and unka angry moments ho sakta Yes, hai. let's see. This Let's will see. be the around mostly Yeah. around fighting scenes. Fighting and all, scenes. right? So let's get started. But before that, if you're new to our channel, don't forget to subscribe to our channel, Yes, and of also course please you have click to on the subscribe to our channel first. नोटिफिकेशन बेल. यस, जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, तभी होगा क्या, हम लोगों के साथ कनेक्शन बना Great रहेगा आप लोगों का, communication राइट. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. Yes. Okay. This is the guy who'll fight for freedom. Attractions. His anger face. बाप रे, One man soldier, right? मैन आर्मी. Himself can beat everyone. Yes, Big army as well. only one himself. Yeah. Only, yes. My God. So real, man. Wow. Did you see the execution? Yeah. It's brilliant. इसको मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. Exactly. Wow. He's super powerful, seems like. He's very suitable with this. My goodness. The way of execution.
super, man. This is looking exactly real. Of course, each and every scene. Okay, it is looking like some videography is going on, some real war is going on, and somebody is doing videography like that only. That's true. Baapre. He's very far with his face. All time angry. Guy. कितना बड़ा वो. That one thing is fighting like anything. That's Yes. Wow. wow. It was full real incident was happening. Yes, was I can looking feel like like that. that. It was happening in front of our eyes only. The way each and everything was executed in this particular series, it is marvelous, man. And everything, every bit of pieces that graphics and all they have used, that VFX. I think 6-7 years ago this series was created, and during that time they have used such a real kind of VFX, high VFX. category of VFX they have used. And this man was One man looking army. so much powerful. I think the best match for this character. Best right? match for this I character. think I'm not sure who would have been replaced this guy. This guy. But this is the perfect one. Perfect means like this is beyond the perfection level. Yes. I was a little uncomfortable because that killing and Lot of, cutting. I am not that habituated Yes. to be Lot very of frank. bloods and all was I there. cannot. I have that kind of phobia. So Yes. Of course, people can not understand. Everybody, not everybody can take this watch kind of. this kind of scenes. बट आई रियली लाइक द होल एग्जीक्यूशन लाइक जो हॉर्स में बैठा हुआ है उसको मार दिया, वो कैसे गिरा, पूरा पूरा रियल लगा. मतलब ऐसा भी एक पॉइंट भी ऐसा नहीं था कि लगा कि भाई ये तो रियल नहीं है, ये कोई एक्टिंग हो रहा है, ऐसा लगा ही नहीं. इन लोगों का एग्जीक्यूशन इतना जबरदस्त है, मतलब पता ही नहीं चलता. वो जो एक्स है, बड़ा सा जो एक्स है, वो ही एकदम सब काम कर रहा है उसी को करके. एंड द वे ही इज होल्डिंग दैट एक्स, द वे ही वाज कटिंग एंड फाइटिंग, इट इज लाइक अनबिलीवेबल. मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है, मैं वही सोचती हूँ. This kind of fighting scene is very difficult to execute. Very difficult. Also, of course, if But this is the real kind of scene, also it's very tough for anybody to kill so many of the people. Right? Also, बहुत लोगों ने हमारे वीडियो पे, लास्ट वीडियो पे कमेंट किया कि ये एक सच्ची घटना है. मतलब ये जो इर्तुगरुल गाजी का जो प्ले है ना, वो एक you have also told. तो it's some historical content. Historical content, yes, तुर्किश हिस्ट्री के ऊपर है, कोई सोल्जर के बारे में. तो ये जो नरगुल है, आई थिंक ये रियल लाइफ में भी ऐसे थे. तो मैं सोचती हूँ कितने ज़्यादा जाबाज टाइप के ये सोल्जर हुए होंगे कि ऐसे टाइप का अपने दुश्मनों को मारे. फिर not you can't say that it's a unique type, but yes, during those time most of the soldier you pick from the history, you'll know a lot of the great soldiers also, right? They are fighting for their country, they are fighting for their nation, for their right. Lot of people you will be able to see, and both lot of the people, they have done a great job, tremendous job. And here also we have witnessed this fight scene. He was amazing. He was looking so damn मतलब good in this role, in this getup. Like वो जो getup वेटअप पहन के लड़ाई करना भी बहुत बड़ी बात है. It is very heavy, the soldiers getup and everything. But instead of everything, it was looking like, because everything is so real and so natural, I am quite sure that whichever getup he was wearing, that is very heavy, must be, because ये जो डायरेक्टर है ना, ऐसा ही बनाया है कि पूरा जो भी सीन्स है सारे को एकदम रियल लगना चाहिए, सबका गेटअप एकदम
ऑन पॉइंट होना चाहिए, तो एवरीथिंग इज लुकिंग नेचुरल मैन. सो इतना ज्यादा नेचुरल था कि मैं तो मतलब देख नहीं पा रही थी. His expression and the way he is getting up like a soldier kind of get up, it's making me a perfect level fighter. तो क्यों मतलब हमें ना ये वेब सीरीज देखने का बहुत मन है क्योंकि हमें समझ नहीं आया कि why he is so angry and what about he is fighting for. I think we have to go into what is the history. main motto of it. Yes, we have to search in Wikipedia and we will be reading every single thing about this. See that web series to yes. get it or know more. Yeah, because ये जो नरगुल है ना, वो पहले वाले जो वीडियो हम देखे थे, जो वो गाना था थीम सॉन्ग में, वो जो नमाज पहनने का बैठे फिर अल्लाह को याद करने के वो सब सीन था. मतलब ही इज एक्चुअली व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज ही इज द लीड ऑफ द सोल्जर गैंग मे बी, एंड ही इज लाइक मंत्री बोल, मतलब ये नहीं मंत्री नहीं, सेनापति बोल सकते हो, जो सेना को एक चालित करता है ना, और लड़ाई करते हैं और बहुत कुछ छोड़ छाड़ के अपने फैमिली को छोड़ के, हाँ कमांडर इन चीफ, यस, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो आए हैं एंड दे आर लिविंग इन अ वेरी like harsh kind of life because of the fight and everything. So of course, must be very tragic story will be there, must be very teary kind of story will be there, and I am very much looking forward to know about that. तो definitely हमें comment section में बताइए कि ये कैसा स्टोरी है, स्टोरी लाइन कैसा है, ये क्यों इतना फाइट कर रहे हैं, मतलब इसके पीछे रीजन क्या है, कोई रानी महाराजा काइंड ऑफ इंसिडेंट है क्या नहीं. ओके, वी जस्ट वुड लव टू से मतलब हियर फ्रॉम यू गाइस एंड जस्ट नैरेट ऑन, यस, इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो डेफिनेटली लेट अस नो इसके बाद कौन सा वीडियो हम कर सकते हैं. in Hindi or English I'm not sure, so not sure. If you get also if it's in Turkish or some kind of Arabic language, then it will be very tough for us to वीडियो में हम understand. अरबिक बोले थे, वो अरबिक नहीं था, वो तुर्किश था. वी आर वेरी सॉरी, बहुत सारे लोग हमें रेक्टिफाई किए थे. Yes, of course, we don't know क्योंकि the हमें language, पता नहीं था, बट यस इट वाज लाइक अमेजिंग. द सॉन्ग अभी भी हमें मेरे अंदर वो मतलब आ रहा है, क्या बोले, थ्रिल आ रहा है अभी भी. मैं लग रहा है कि कानों में मेरा गूंज रहा है वो सॉन्ग का वो जो ये था ना धुन. They have removed that background. हाँ, they have removed it. Maybe some issues or something. Yes. So yeah, that is it for today's video. We really enjoyed it. It is like amazing, man, and everything which is real, which is looking very real and natural, always like caught our attention because their execution, because of their acting, every single thing. हमें वैसा टाइप का देखने में अच्छा नहीं लगता जो देख के लगेगा कि अरे ये तो एकदम मजाक करके रखा है, लो क्वालिटी, मतलब मजाक कर रहा है, ऐसे ऐसे करके मार कर रहा है, ऐसा वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है. बट ये वाला एकदम जबरदस्त था. 10 on 10 from our side, right? Fighting, of course, we were here to give our reaction on the fighting scene. On the fighting scene, and this was the perfect fighting scene, you can say. And one disclaimer, एक disclaimer दे देना चाहती हूँ, हम कोई भी इसको बढ़ावा नहीं देते हैं कि मारना काटना, कोई रिलीजियन इसमें हम नहीं जाना चाहते. बहुत सारे लोग हमारे पहले वीडियो में बोले हैं, बट दिस इज जस्ट अ रिएक्शन चैनल गाइस. हम जस्ट रिएक्ट कर रहे हैं और ना फाइट सीन, दैट्स ऑल. इसमें कोई रिलीजियन इश्यूज के अंदर मत जाइए, कोई हम बढ़ावा नहीं देते कि आप लोग चलो और मारपीट शुरू करो, लड़ाई करो, हम कभी नहीं बोलते ये बात. That was the time when it used to happen. It used to happen. It's not that the same kind of situation. It will happen and everybody will agree with that. ये रहा आज का वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल मत भूलिए. एंड ये वीडियो पे लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ. फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय.